This conference will now be recorded. अप्रिशिएट करेंगे और उनको और मोटिवेट करेंगे. So before starting the session, I will request Dr. Sahab for recitation of Quran Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Thank you. Now I will request our Honorable General Secretary to come on the dais and start the session. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of OSP Lahore, this is such a delight, and I am incredibly humbled to be here with elegance and elite of medical fraternity. I would like to extend my deep gratitude to Honorable and worthy Professor Dr. Abdul Majid, a very kind, humble, and competent teacher. Another competent teacher and surgeon, Dr. Niazi Saab. Then we have young and dynamic senior registrar, Dr. Sajid Kazmi and Dr. Anam. Prestigious gathering from different institutions of Lahore. As we know, professional societies are believed to play a significant role in benevolence and professional development of its member. So we are grateful to our worthy teachers since the start of conception of this society. And right now we have more than 17 branches across the Punjab with so many emerging subspecialties. Even starting of this monthly clinical meeting is such a great and historical breakthrough because it provides the greatest avenue for teaching, training, and refining of clinical and surgical skills up to some extent. And in that regard, we are grateful to our teachers like Professor Imran Akram Saab, Professor Ahmad Bhatt Saab, Mia Arshad Saab, Mia Afzal Saab, Dr. Arshad, Colonel Munir Saab, and so many other great teachers for their historic contribution through time to time. OSP Lahore has uplifted research culture in the country through the innovation of high impact journal PGO, then ORIF, and then we have resident research papers at the eve of annual mega gigantic academic conference, which is ophthalmo, held every year per continental. We have routinely conducted medical education sessions and leadership development program through the platform OSP for continuous professional development and continuous medical education. We have quiz, wet lab, simulation, live surgery sessions for our young faculty, people working in the remote periphery. These clinical meetings are in fact sort of workplace-based assessment, which is now a mandatory part implemented by the CPSP, which allows you to reflect your weakness, and then you can refine these weakness under the guidance of so many consultants sitting here. And OSP has a tradition of awarding souvenirs and certificates and even cash prizes to the presenters. So I would like to request our teachers like Professor Ahmad Bhatt Sahab, Professor Imran Akram Sahab, and Mia Afzal Sahab. They will serve the purpose of judge to grade the presentations. Now I would like to formally request the medical officer,
of Fatima Hospital to proceed with the further scientific session. Thank you. Before starting the session, clinical session, I should just give a brief idea that our hospital is still under the process of accreditation for FCPS Part 2 training. So we don't have PGs. Our MOs and our SRs are there to present the cases. Similarly, our dermatologist, Professor Tariq Zaman, was to present his own case with the relevant disease of skin and ophthalmology. But due to his family commitment, he could not attend. He told me a couple of days ago. So it is me, myself, will be presenting guest lecture from ophthalmology with the relevant things we are discussing. Now to start with, I will request Vakar to start the session. Assalamu alaikum and welcome to all respected teachers and my esteemed colleagues. It's an honor and I'm privileged to present an interesting case in front of you all. Uh, आगे करना। A boy 10 years old, resident of Shadman of low socioeconomic status, presented to us on 22 May in OPD with presenting complaint of decrease in vision of both eyes for last 2 years. With no known comobs, his loss of vision was gradual, painless, and partially improved on wearing spectacles. Associated with seeing double images upon closing his eyes, there was no associated history of flashes, floater, redness, or any other symptoms. His past ocular history includes a diagnosed case of glaucoma, and he was using cortisol for last 6 months. Apart from that, his past medical, past surgical, drug history, and personal history was not significant. He had a strong family history of marfanoid features, uh, uh, like his grandfather having enlarged arm span and visual disability from very young age. Surgery was not as advised, and lost total vision by the age of 60. Here is a tree of his other family members, which include grandfather and grandmothers, his uncle, and his mother. Upon general physical examination, he was thin, lean built boy, fully oriented in time, place, vitally stable. General physical examination revealed marfanoid habitus, tall, thin stature, arm span greater than height, 130 centimeter of the arm span and 125 centimeter of the 130 centimeter of the arm span and 125 centimeter of the height. Rest of the feature included high arched palate, archanodactyly, wrist sign and thumb sign was positive. Upon ocular examination, his visual acuity was 660 and counting finger in right and left eye, respectively. His AR reading was minus 9.5 by 7.75 into 145 degree in right, and minus 8.25 by minus 3.5 into 110 in left side. Upon refraction, his visual acuity improved to 618 bilaterally. On slit lamp examination, his anterior chamber was shallow infranasally and deep supratemporally in right eye and normal in left eye. Iris show iridodonesis bilaterally. Crystalline lens show phacodonesis and subluxation infranasally greater than 180 degree in right side and 90 degree in left side. Zonules were disintegrated bilaterally. Uh, uh, Upon measurement of IOP, 20 mm of Hg was in right side and 19 in left side. These are the images of his lens showing lens subluxation in right eye and left eye respectively. Posterior segment showed peripheral retinal thinning and cupping of the optic disc bilaterally.
Systemic examination was unremarkable. Our differential included Marfan syndrome, homocystinuria, and Weil-Marchesani syndrome. We ordered systemic investigation, urine, cyanide, nitroprusside, and blood for homocysteine levels, which came out to be the normal. Ocular investigation included bilateral OCT, ONH, and RNFL, and visual field glaucoma was performed, but it was inconclusive due to the non-cooperative patient. Here is the OCT showing bilateral retinal nerve fiber layer thinning, uh, greater in right side than left side, and bilateral cupping of optic disc. As these findings are inconsiderate with myopic patient, so we further advise GCC, which showed bilateral thinning in left and right side, bilateral. So our diagnosis upon exclusion of other differentials was Marfan syndrome with subluxated lens right greater than left side. Our primary aim of the treatment was glaucoma management with regular follow-ups. Lens surgery was not advised due to better BCVA and no cataractus changes. Now we'll be discussing briefly about Marfan syndrome. Its pathophysiology include mutation in FBN1 gene leading to reduced fibrillin levels, which leads to increased transforming growth factor beta, which results in cellular proliferation, migration, and differentiation, leading to excessive growth, resulting in multi-system disorders, including skeletal, cardiovascular, ocular, pulmonary, and skin. Here are the clinical manifestation of the Marfan syndrome, most of the which are discussed in our patient. Others include cardiovascular aortic dilation and risk of aortic dissection or aneurysm. Pulmonary system include spontaneous pneumothorax in up to 15% of patient and stretch marks on the skin. Here is the diagnostic criteria. It is divided into the two cases. One is in the presence of the family history, and other is in the presence or absence of the family history. In our case, it was the in presence of family history with presence of ectopia lentis and systemic score greater than 7. Now coming to the management, our goals include prevention of the complication, genetic counseling, and yearly monitoring for cardiovascular, skeletal, and ophthalmic issues. Interventions are required. Two of the activity restriction is basically to reduce cardiovascular strain, physical therapy to improve cardiovascular performance. Aortic surgery is recommended once the aortic diameter is above 50 mm. Ocular management included refraction. Children should be monitored and treated for amblyopia. MFS patient should be monitored for the development of ectopia lentis, cataract, glaucoma, and retinal detachment. In the setting of the subluxation, indication for the lens extractions are given below, which is lens edge bisecting the pupil with impossible optic correction, lens dislocation in the vitreous cavity, or anterior displacement of with secondary glaucoma and cataract formation. As it is a multi-system disorder, so a multidisciplinary team is needed to manage other complications. Few are the pharmacological therapies, which include beta blockers to reduce the aortic stress. Newer therapies include angiotensin II blockers, which are linked to TGFs, decreasing the transforming growth factor beta signaling. Prognosis, all the prognosis, coming on to the prognosis, all the complications of the lens extractions are possible in patient with MFS and occur with higher frequency as compared to the general population. Advanced surgical techniques are often required to improve the outcomes as a result of their systemic manifestation, particularly cardiovascular complications. Marfan syndrome patients have life expectancy that is approximately half that of the normal population.
Thank you for your patience. Jazakallah. जी सर. इसका चचा क्यों मरा था? His uncle died at the age of 35 years. क्यों? Sir, it was not the exact cause on not known by them, but possibly due to the most common cause of death in this patient is aortic dissection, because there is progressive aortic root dilation which lead to aortic dissection. उससे पहले क्या होता है? डिसेक्शन से पहले क्या हो जाता है? डिसेक्शन तो नहीं हो जाती ना, आहिस्ता आहिस्ता रूट नहीं ठहर बड़ी हो गई ना. हाँ, तो अब उससे क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? रिगर्जिटेशन होती है यार स्टार्ट में, रिगर्जिटेशन होती है स्टार्ट में, स्टार्ट्स गोइंग इनटू कार्डियक फेलियर. डिसेक्शन देखें तो बहुत बाद की बात है. इसमें चेक किया नहीं, इसको चेक किया, इसके हार्ट को भेजा. गुड गुड गुड. बेसिक डिफेक्ट क्या है? बेसिक डिफेक्ट इसमें क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मुझे चाहिए. फिजिकली बेसिक डिफेक्ट क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली या डेवलपमेंटली? नहीं यार, नहीं नहीं और नहीं. एक पैथोलॉजी जो एयोर्टिक डायलेटेशन को भी एक्सप्लेन करती है, जोन्यूज के टूटने को भी एक्सप्लेन करती है, हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी को भी एक्सप्लेन करती है, वो क्या है? और lead to cellular proliferation और differentiation और growth जो है क्वालिटी वाली होती है. इन्होंने बताया कि उसकी कोलेजन जो होती है वो कमज़ोर होती है. तो कोलेजन कमज़ोर होगी, उसके जोनल भी टूट जाएंगे, उसको आयोटा भी डायलेट कर देगा, जॉइंट्स भी इस तरह के हो जाएंगे. ठीक है ना? एक एक पैथोलॉजी होती है जो सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही होती है, उस पर जोर देना होता है. ठीक. तो ग्लाइकोमा क्यों हो गया? इसमें क्यों हुआ? उसके अलावा क्या रीजन हो सकती है? यार जब लेंस आगे से हट गया तो क्या होगा? आगे से लेंस हट गया तो क्या होगा? सर क्वेश्चन बड़ा सर का वैलिड है कि ग्लाकोमा क्यों होगा. एक तो इसमें जेनेटिक हिस्ट्री थी, फैमिली हिस्ट्री थी, जीन में here was having traits for glaucoma in the family. Probably that was also linked to the same disease in the parents and ancestors. Secondly, होता ही है इसमें कि in this patient there was no vitreous in the anterior chamber. The venules were intact, lens was at wrongly placed. I mean, it was subluxated, but there was no vitreous. But there was malformation in the ankle. That was most likely reason because overall the anterior segment dysgenesis. The part of that it was glaucoma in this patient. And again, the structure of the angle and the deposits of this abnormal material is there in the angle, just like other parts of the body. So that caused glaucoma. Apparently, that is the reason clinically.
And the treatment is same as for glaucoma. The patient is being managed to maintain the pressure, intraocular pressure below normal range. हम तो कोशिश कर रहे हैं 12 तक आ जाए, but वो मेडिसिन इतने कंटिन्यूसली रेगुलरली यूज नहीं करते. तो that is about glaucoma. तो साहब जी अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंट्स. ये ग्लाकोमा तो सीधी सी बात है कि इसमें डिसजेनेसिस है आपका ट्रेपेकल मेशवर्क का. दूसरी चीज ये है कि इसमें जोन्यूल्स जो है वो इलांगेटेड होते हैं और इंटैक्ट भी होते हैं. इसलिए ऐसे केसेस में इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन जो है वो ट्राई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. आजकल इसको ज्यादातर कुछ लोग कर रहे हैं कि जो है इसको आगे ब्रिगेड साहब बताएंगे, कैप्सूल फिक्सेशन या सीटीआर डाल के तो इरिगेशन एस्पिरेशन करके तो लेंस भी डालते हैं, लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड जो है दैट इज लेंसेक्टमी एंड एंटीरियरेक्टमी. अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं कंसिडरिंग टू थिंग्स, जो उन दो चीजों की वजह से हमारे ज़हन में और भी कुछ आना चाहिए. जो मार्फन्स में जो डिसलोकेशन होती है, इट इज यूजली सुप्रोटेम्पोरल वन. दूसरी चीज जो यंग एज में डेथ्स हुई हैं और फैमिली हिस्ट्री है, ये इसमें हमें एक चीज और बहुत ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत है. ऑल्दो दैट इज वेरी रेयर, लेकिन जो एलर-डेनलॉस सिंड्रोम, उसकी काफी सारी सब टाइप्स हैं. एक सब टाइप ऐसी है, वो फाइकोस्कोलियोसिस और समथिंग लाइक दैट. उसमें वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, यंग एज पे डेथ वेस्कुलर रप्चर की वजह से होती है. ठीक है. दूसरा चीज जो है उसमें जो डिसलोकेशन है दैट इज इंफीरियर और इन्फोनेजल. इसलिए खासतौर पर फैमिली हिस्ट्री जो है, फैमिली हिस्ट्री दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. जो वो 25% बच्चे हैं वो उनमें डिजीज प्रोसेस होता है, 50% जो है वो कैरियर होते हैं, 5% नॉर्मल होते हैं. इसलिए वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जरूर ध्यान में रखना चाहिए. दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सडन डेथ इन यंग एज. थैंक यू. Thank you very much. Any other comment or question, please? इसमें आपने you have mentioned कि patient is having also high myopia. Have you considered कि it's only due to this subluxation of the lens or any element of keratoconus also? High myopia है, it may be due to the subluxation of the lens and globular. Okay. It's Was it axial in nature or lenticular in nature? The axial length was around 24. हाँ जी, वो भी हाँ जी लेंटिकुलर की वजह से. और दूसरा ये कि चूंकि एसोसिएशन है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज सारे ये इन्वॉल्व होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन लेमेली भी बहुत. तो इसमें एक चूंकि बाज़-औक़ात कॉर्निया केराटोकोनस भी होती है, तो वो भी देख लेनी चाहिए. हो सकता है अर्ली एलिमेंट कोई हो या ना हो. Carrying was okay. आपको पॉइंट बड़ा वैलिड है. It was axial as well as curvature. Axial because length was for his age it was 3 millimeter longer than the normal. Secondly, lens is not being controlled, so it can take its own shape because of poor support of Xeon needs. So दोनों तरह से था. And thank you very much. Next. Now I would like to call Dr. Mariam for her presentation. Good luck. Thank you, Dr. Bakar. Assalamu alaikum, everyone. My name is Dr. Mariam Nadeem. I'm working as a medical officer in the Department of Ophthalmology here at Fatima Memorial Hospital. And today I'm going to be presenting a very interesting case with you all. I begin my presentation with the history of a patient. Who is 40 years of age, married, resident of Gujranwala in Punjab, and belongs to a low socioeconomic status. Her presenting complaints were decreased vision in both the eyes since the last 2 years.
Past ophthalmic history shows that there was no specific history of any prior ocular disease. Upon going to a local eye clinic for evaluation, the doctor advised for cataract surgery. Her brother has history of similar ocular complaints. Wait. Okay. Systemic history shows that the skin had increased wrinkling and areas of hyperpigmentation over the neck since the past many years, which she thought was due to advancing age. Rest of the cystic examination was unremarkable. Her general physical examination showed that she is a middle-aged woman of average height and build, fully oriented with time-laced person, having the following vitals, all in normal range. As you can appreciate that over here, the skin has increased pigmentation. Wait a second, sorry. There's increased pigmentation over the skin, which is giving a classic pudgy orange appearance and increased wrinkling of the skin. Her ocular examination showed the visual acuity in the right eye to be 616. After best corrected visual acuity, there was no improvement, whereas in the left eye, her vision was 636 partial, and after best corrected visual acuity, it improved to 624 partial. The intraocular pressure were in normal range. This is a colored fundus photograph of her right eye showing you can appreciate the presence of curvy linear lines which are radiating from the peripapillary area around the optic disc. The foveal reflex is altered, and you can appreciate a well-defined greenish yellowish scar supranasal to the fovea. This is the periphery of the right eye, which shows multiple atrophic pinpoint lesions, which are radiating. The tails are radiating towards the optic disc, giving the comic tail appearance. This is the colored fundus photograph of the left eye, showing similar findings. Here you can appreciate a well-defined scar, and there are also linear curvy lines radiating out from the peripapillary area. The periphery of the left eye. This is a red-free photograph of the right eye, and this is a red-free photograph of the left eye. Fundus autofluorescence of the right eye shows the android streaks having area of hypoautofluorescence, whereas the scar has area of hyper and hypoautofluorescence. Similar findings are seen in the fundus autofluorescence of the left eye. Based on this, the differential diagnosis we make right now is pseudoxanthoma elasticum with angioid streaks, Paget's disease with angioid streaks, lateral cracks in high myopes, and choroidal rupture. Further investigations such as OCT macula shows that there are areas of hyporeflective spaces in the inner nuclear layer. The foveal contour is altered, slightly altered, and there is increased thickening in the temporal side with areas of subretinal hyperreflective regions and outer retinal layer disruption. This is the OCT of the left eye showing similar findings. OCT angiography of the right eye shows fine thready vessels which are present in area of the outer retina and the choroid. And this is the OCT angiography of the left eye. Similar findings can be appreciated over here. Other investigations such as blood count and other blood investigations were all within normal range. Furthermore, we took a punch skin biopsy on the histopathological report. You can see increased clumping of elastin fibers in the middle and the lower layer of the dermis with a positive calcium stain. So now our provisional diagnosis is pseudoxanthoma elasticum with angioid streaks and CNV. Now treatment. Treatment involves a multisystemic approach. Patient was referred to dermatologist for further evaluation. Patient was advised to avoid contact sports. For CNV, bilateral intravitreal anti-VEGF was advised, and patient was asked for regular follow-ups.
Visual acuity improved by 1 line in both eyes after anti-VEGF injections. This is the OCT after the first anti-VEGF, and you can appreciate that the thickness has decreased. This is the OCT after first anti-VEGF of the left eye. Again, their thickness has decreased if you compare both of them. Now, a little about angioid streaks. They are grayish or dark reddish lines extending radially from the optic disc, having a cracked line appearance, and they lie deeper to the retinal vessels. The pathophysiology behind this disease are two pathogenic mutations in gene ABCC6, and there is a dual mechanism theory, which there is a primary abnormality of fibers of the Bruch's membrane, or abnormal elastogenesis is due to increased availability or deposition of metal salts. Conditions associated with angioid streaks are pseudoxanthoma elasticum, Paget's disease, senile elastosis of the skin, hemoglobinopathies, hereditary spherocytosis, and in 50% of the cases, they are idiopathic. Pseudoxanthoma elasticum is an inherited disorder of the skin, eyes, and the cardiovascular system. Most of the cases are sporadic. The mode of inheritance is autosomal dominant and recessive, recessive being the more common type. Now, if we simplify the diagnostic criteria, it is based on ocular findings of angioid streaks greater than 1 disc diameter or purity orange in an individual of less than 20 years of age, along with other characteristic pseudoxanthomatous findings of the skin. Diagnosis is based on histopathology showing increased elastin deposition in the middle and the lower layer of the dermis with a positive calcium stain. Ocular complications include choroidal neovascularization, choroidal rupture, and foveal involvement by a streak. Treatment is first and foremost, you have to rule out the systemic cause, avoid minor trauma, and treat the complications. In cases of ocular involvement, the patient is advised to come for fundoscopies after every 6 months. The patient is advised for serial OCTs so that we may see if the subretinal fluid has resolved or if there is new CNVs which are being developed. And the patient is advised to check the ampular grid on a daily basis to see if there is any abnormality, any distortion of images, and the patient is advised to come immediately in the case. If there is dermatological involvement, patient is advised to treat that accordingly. And if there is a general surgical referral is required if the patient has complaints of bleeding. As seen in 10% of the cases, there are gastric hemorrhages occur in these patients. Regular follow-ups are very important as well as counseling of the patient regarding the disease. Serial OCTs should also be performed. Thank you. इनमें लॉस क्यों होता है? Why do you lose vision? Any questions, sir? Question ये है कि visual loss क्यों होता है इसमें? Sir, visual loss because of the macular involvement in these cases, CNVs develop, which is why there is decreased choroidal neovascularization. Due to this, there is decreased vision in the patient. लीकेज स्कारिंग एक्सेट्रा. ठीक है सर, हो चुका है उसमें. अच्छा मैं choroidal new vessels बन रही होती हैं, वो क्या करती हैं? लीक करती हैं. New vessels, as they are vulnerable to leakage, this will lead to edema development. वो पिक्चर दिखाओ. ठीक है सब. अच्छा पिक्चर दिखा दो. दे जाए वापस दे जाए ना. मैं वो सिटी ये देखिए ना, ये तो बात ट्रीटमेंट की बात की है ना. ये सामने नजर आता है. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने कहा कि एडवाइज टू अवॉइड कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स एक्सेट्रा.
What's the reason? Because there is weakness of the skin, so it can lead to damage. Skin ki weakness. Sir, any organ, basically diseases of elastic As far as eye is concerned, and it's something specific in such cases. ocular trauma leading to एक्चुअल जो है इसमें ठीक है, ब्रुक्स मेम्ब्रेन जो है दैट इज डिफेक्टिव, ठीक है, वो रप्चर हो सकती है। इवन अगर वीआर के यहाँ पे कोई लोग बैठे हैं तो वो बता सकते हैं या बताएंगे कि इवन व्हेन यू आर एग्जामिनिंग द रेटिना इन सच पेशेंट्स, स्किलर इंडेंटेशन या तो अवॉइड करनी चाहिए या बड़ी जेंटल करनी चाहिए, बिकॉज जो आपकी ब्रुक्स मेम्ब्रेन है दैट इज ब्रिटल, वो फर्दर रप्चर होती जाती है। थैंक यू। वो लीकेज के साथ विजन क्यों कम हो जाती है? नहीं, लीकेज से विजन क्यों कम हो जाती है? लीकेज तो रेटिना के नीचे है ना। क्या होगा बेटे बताओ? अच्छा अच्छा अच्छा, और इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है? ब्लीडिंग भी हो सकती है, हाँ ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो आपने इसका क्या ट्रीटमेंट किया लीकेज रोकने के लिए? जब क्या होता है? हाँ हाँ, ये क्या 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 दोबारा हाँ हाँ, ये राइट बताओ। अच्छा ठीक है। Can anybody show me the layers of OCT on the left side? Can you count the OCTs? Layers बताएं सबको एजुकेट करने के लिए। ये लेफ्ट साइड पे जो है सारी लेयर्स पूरी करें। कौन बताएंगे? जो मर्जी है, इस वक्त तो शी इज द प्रेजेंटर। नहीं, ये बेटा बताएगा ना, इसको दो ना, जो ये आइडेंटिफाई कर सकता है ना आइडेंटिफाई। अच्छा, partial PPT है, यहाँ पे fluid आया हुआ है PPT, and there is a if we see from the inner side पे देखें, this is the arcane Brooks membrane, और उसके यहाँ पे photoreceptor layers cells are which is destroyed at the area of the choroidal neovascularization. There is infiltration of the hyperreflective area on the temporal side of the retina cell, which is showing that some choroidal neovascularization infiltrating into the subretinal space. And inner nuclear layer and inner plexiform and inner nuclear layer shows this hyperreflective spaces over there. And however, the innermost retinal layer shows integrity is intact over there. अब लेफ्ट साइड पे आगे बताएं। लेफ्ट साइड पे तो सर all the layers are normal. काउंट करें ना? सबसे सर innermost है internal limiting membrane. Then comes the retinal nerve fiber layer, then ganglion cell layer, sir. Inner plexiform, outer nuclear, inner plexiform. तो उलट बता रहे हैं आप। उलट बता। शुरू किधर से कर? बिस्मिल्लाह तो इधर से करनी है, नीचे से। ओके, स्लो बताओ। And then comes the inner segment, outer segment junction, so photoreceptor layers as well. Then comes the outer nuclear layer, outer plexiform, inner nuclear, inner plexiform, ganglion cells, nerve fiber layer. जो यहाँ पे ज़्यादा predominantly अच्छा नजर आ रहा है nerve fiber layer. Excellent. And then comes the internal limiting membrane. Excellent. ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और साथ हाइपर रिफ्लेक्टिव, ये इस लेयर को क्या कहते हैं? ये जो इनर वाइट लेयर है, ये नहीं इधर, ये नहीं, तो आजकल नाम क्या है? एलिप्सॉइड। तो व्हाई इज सो हाइपर रिफ्लेक्टिव? बिकॉज़ ऑफ द फोटोरेसेप्टर layers junction. Hyper reflective.
concentration of mitochondria. So that is the reason. अगर ellipsoid zone break हो जाए, that means the outer layer की integrity खत्म हो गई है. तो जो क्लासिकल ओसीटी है इसमें बाहर दो वाइट लाइंस होती हैं, एक रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम वाली पॉइंटर उस पर ये वाली, ठीक है, और दूसरी एक थोड़ी सी कम होती है और फिर ये वाइट. तो आप जो ट्रेनिंग्स हैं सिर्फ ये याद रख लें कि दो वाइट लाइंस हैं. जैसे ट्रेबेकुलर मैशवर्क में 4 लाइंस होती है ना, ठीक है. सो उसी तरह ओसीटी की आउटर वाइट लाइंस जो हैं वो वाइट ग्रे. तो जो दो वाइट हैं दे आर मोस्ट क्रिटिकल. दो पहली वाइट जो है वो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को शो कर रही है, और जो दूसरी वाइट है, यू आर राइट, पहले इसको ISOS जंक्शन कहते थे, अब इसको सिर्फ कहते हैं लिप्साइड जोन. तो जो ओसीटी आप क्विकली ओपीडी में बैठ के देख रहे हैं, तो आप सिर्फ ये देखें कि ये दो वाइट लाइंस कॉन्टिन्यूस हैं कि नहीं है. इफ दे आर ब्रोकन इन द मिडल, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद द इंटेग्रिटी ऑफ द, और खास तौर पे अगर शुरू में डायबिटिक मैकुलर एडीमा है, एज रिलेटेड एट्रोफी है, तो एलिप्सॉइड जोन इज द हाई वाटर मार्क. अगर वो टूट जाए तो इसका मतलब है रिसेप्टर्स खराब हो गए. बेसिकली ये न्यूक्लियाई होते हैं रॉड्स और कोन्स के, जो एलिप्सॉइड जोन बनाते हैं. तो न्यूक्लियाई जब डैमेज हो जाएंगे तो फिर एवरीथिंग विल गो. I would like to add one point here. In this case, the bigger catch was the middle-aged lady came to her native town for the visual rehabilitation, and local ophthalmologist diagnosed is a case of a cataract and advised cataract surgery. So please, my humble request for the residents and for those who are in the learning processes, must always dilate the fundi and check the fundus of the patient, because whole of the world might be, and the problem might be lying behind the part of the retina. This is simple take home message that please don't advise, because she was already having nuclear cirrhosis grade 1 and vision loss was painless progressive in nature. So history was fitting into the cataract, but please must dilate the patient. If you have got the local facility of, must always use the direct as well as indirect ophthalmoscopy की आपकी जो practices हैं वो अच्छी होनी चाहिए, so that you can read and identify the diseases which are in the periphery of the retina. And if you have, now every town has the facility of OCT, must go for OCT after diagnosing the fundus changes. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Saeed Sajid Hussain. Today I am going to present a case presentation. I am working here in FMH as a senior registrar. And today my supervisor Dr. Nasir Chaudhary also sitting over here, and I am very honored to present over here. So our patient, 6 years female, resident of Bahawal Nagar, present on 28th of February to FMH. Her presenting complaint was sudden decrease of vision in the right eye for 1 month. Patient was in her usual state and the vision loss is severe, painless, and there was no history of flashes and floaters. It was associated with onset of watering as well. Her birth history was normal. Developmental history, she achieved a bit late developmental milestone, and past history, she had dandivocal malformation which was diagnosed 1 year back, and there was umbilical hernia 1.5 years back as well. Her medication history was she was not taking any medication currently. And family history, she had first cousin which had dislocated crystalline lens in one eye and subluxated lens in other eye, and 2 other cousins also complained of similar eye problems. Her father was occupation by occupation he was a farmer. Her systemic examination vitals were normal. However, she had short stature, blonde hair. She was alert but unable to comprehend and follow the commands fully. Her abdomen showed scar mark on the umbilicus.
this was her physical examination. She was short stature, and this was blonde hair, and she had umbilical surgery before, and there was umbilical hernial scar. Visual acuity, right was counting finger, which was not improving on best correction. However, in the left eye, it was 636 and improving up to the 612 with -5 of the spherical diopter. And there was crystalline lens dislocation in the anterior chamber, and there was lens subluxation infranasally in the left eye. The rest of the eye examination was normal. This was the picture which was showing that the dislocated crystalline lens in the right eye, however, infranasal subluxation in the left eye. This is the dislocated crystalline lens in the right eye. And there is nearly 180-degree subluxation infranasal in the left eye. So the investigations, we run out the complete blood count and baseline investigation for the GA purpose, and we also ordered prothrombin time and APTT time and INR, along with serum homocysteine level, and some systemic investigation of echocardiography and CT brain is also advised. So CBC showed that it was a microcytic hypochromic anemia along with increased level of TLC and level of the platelet levels as well. Homocysteine level showed there was her level was 500 micromole per liter, which was way high for her age. And the previous echocardiography report showed that the heart was structurally and functionally normal. And CT showed, however, that this was an incidental finding. She showed that there was dendivocal malformation of her brain, which was at the level of the cerebellum. There was the dilated fourth ventricle along with the supralateral displacement of the cerebral hemisphere. Based on the investigations and the findings, our differential diagnosis was homocystinuria, Marfan syndrome, along with Weil-Marchesani syndrome. However, because of the homocysteine level, raised level of the homocysteine, we labeled her as a homocystinuria. So the treatment we given at FMH for this patient was for the dislocated anterior crystalline lens. We extracted the lens via the anterior approach along with the anterior vitrectomy, and the aphakic refraction is done for the short brief period, and scleral fixation is planned for the future purpose. This was the per-op picture. There was dislocated crystalline lens, which is seen in the anterior chamber. After the extraction of the crystalline lens through the anterior approach, we did the anterior vitrectomy through the anterior approach. Further treatment advice, we did a multidisciplinary approach. We involved the pediatric department for the systemic management. They advised low methionine diet along with the supplementation of pyridoxine, folic acid, B12 and B10. And for ocular examination, we did the spectacle correction for the left eye and aphakic correction in the right eye. And surgical removal of the lens eye if the dislocation is severe planned in the left eye. So briefly discussing about the homocystinuria, the epidemiology of homocystinuria, it is more common in the non-Finnish and Latin Americans. The incidence is way higher in the American peoples, and however in the Asia it is quite low, 0.02 per 100,000. Autosomal recessive inheritance pattern along with the defect in the cystathionine beta synthase enzyme, which is a protein coded on chromosome 21. And basically, homocysteine is converted into the cystathione with the help of the cystathionine beta synthase enzyme. B6 acts as a coenzyme, and homocysteine is also converted into methionine, and with the help of the folate, it is converted back into the methionine with the help of folate and betaine. So accumulation of homocysteine is basically metabolized to the other products into the cysteine and methionine. So when the defect in the CBS occurs, so the level of the homocysteine enzyme increases. The level of raised homocysteine causes the sulfonyl hydrolink group cross-link with the proteins such as elastin in the tissues, and it causes the accumulation of the cysteine products, which causes the apoptosis and oxidative stress, and ultimately the alteration of the structure of the fibrillin protein. And it also contributes to the connective tissue abnormalities and vascular endothelial dysfunction. So there are some non-genetic risk factors for this disease as well. These are B6, B9, and B12 deficiency, cigarette smoking, alcohol consumption, coffee consumption, and drugs, methotrexate, nitrous oxide. Particularly, this is important for when you are planning patient under GA, so you should avoid nitrous oxide. Then phenytoin and carbamazepine, some anti-epileptic drug, also increases the level of the homocysteine. Age is also a risk factor. Female has high prevalence rate. Systemic manifestation, 50% of patients present with Marfanite habitus, and in CNS there could be a developmental delay, intellectual disability. In our case, the patient was slightly having intellectual disability, and movement disorder and seizures can also happen. It also affects the central cardiovascular system. Congestive heart failure could be there.
It initiate and worsen the atherosclerosis, and it affects the elastic fibers. So there is also increased risk of thromboembolic event, particularly stroke, pulmonary embolism, and even the embolus of iris are also documented in some cases. Risk of thrombosis increase during any perioperative period, particularly when you are going for the general anesthesia. Ocular manifestation, ectopial lentis occur in 90% of the cases. By the age of 7 years, it is around 70%. However, by the 5th decade, it reaches up to the 95% of the cases. High myopia patient can be both axial and lenticular. It is the second most common manifestation. There is a theory that if you control the homocysteine level before the age of 6 weeks, अगर आप neonatal screening करते हैं, and you have a good control of the homocysteine level urea, so there is also good control of the myopia as well. If it is not controlled very good in early age, then there'd be increased chance of having high myopic, even greater than -5 diopter. Other risk factors: papillary block glaucoma, open angle glaucoma, retinal detachment, ischemic optic neuropathy, cataract, amblyopia, even AMDs. Early AMD happens in these patients. There are two theories. One is homocystinemia. When the level is less than 15 micromole, less than 100 ml, it is labeled as homocystinemia. When it is greater than 100, it is homocystinuria. Homocystinemia basically predominantly affect the vessels. It causes ischemic optic neuropathy, vein artery occlusion, papilla edema, optic nerve disease. However, when the level increases, it furtherly degrades the other structure, for particularly the lens. It happens with high myopia, nearsightedness, subluxation of the lens, retinal degeneration and detachment, and secondary glaucoma. Lab test homocysteine level, if it is less than 15 micromole, that is the normal level. If it is greater than 15 micromole, then it is homocystinemia. And if it is greater than 100 micromole, it is labeled as homocystinuria. It is the severe form of the homocystinemia. Provocative tests we can also apply. We can also done with the help of oral methionine. EDTA should be added and centrifuge within 30 minutes to prevent false reading. And along with these tests, newborn screening is also important along with genetic testing. Systemic management, there are different management available. Pyridoxine, B12, B6. Usually patient respond 50% to the vitamin B6. However, those who are non-responsive to pyridoxine, then you have to add additional folate, vitamin B6, B12 and B10 supplementation. Risk of thromboembolism is increased in these patients, so you have to be very careful during perioperative period. And nitrous oxide, particularly, it inhibits the methionine synthase, which accumulates the methionine further, and it also further increases the risk of thromboembolism. Prognosis: if it is left untreated, homocystinuria, what will happen? 82% of patients will have ectopia lentis by 10 years of age. And if it is left untreated, the systemic thromboembolic event, there is chance of 27% of chance having thromboembolic event by age of 15 years, and by age of 30 years, the risk reaches the 50%. Thank you. Sajid, it's really very good presentation. Thank you, sir. और बहुत मेहनत की आपने. अच्छा, having said that, I would like to ask a few questions, not for you. I know that you are knowing that, just for the others. Yes, इसका बताया कि आपने सर्जरी करनी है, तो are you going to, वैसे तो anesthetist को खुद पता होना चाहिए. Are you going to instruct or tell the anesthetist this patient is having homocystinuria and what precautions to do? Particularly सर सबसे important चीज़ है while general anesthesia. जनरल में जीए की बात ही उसकी कर रहा हूँ. जी सर, बच्चे हैं ना, बच्चों को जी सर. Nitrous oxide particularly you are not going to use during the anesthesia. ठीक है, आपने मेंशन किया क्यों? Because it's the methionine synthase enzyme को inhibit करता है, क्या करेगी फिर? Which will further increase the level of homocysteine levels. No, it is going to cross the blood-brain barrier. ठीक है, उसको डैमेज करती है. दूसरी चीज तो एक और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो एनेस्थेटिस्ट को पता नहीं है. वो ये है कि उसको हमेशा जो है ना उसमें कभी भी जो है ना उसको हाइपो में नहीं जाने देना कि इस हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, अदरवाइज जो है वो प्लेटलेट सेग्रीगेशन बढ़ जाएगी, तो सडन डेथ भी हो सकती है. व्हाट आर अदर इस होमोसिस्टिनुरिया में जो सडन डेथ के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? होमोसिस्टिनुरिया से पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क ज्यादा है सर. पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क है सर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है सर, प्लेटलेट सेग्रीगेशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म,
तो वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म किस वक्त भी हो सकता है। दूसरी जो चीज एक और है कि ये जो है आपकी लाइन को भी खराब करती है, ठीक है, आपने बताया हुआ है कि वो अर्ली स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है और वो किसी वक्त भी जो है ना रब्ता भी हो सकता है, तो वहीं से कोई आपका एम्बोलिज्म ऊपर जा सकता है। However, it was really excellent case. Thank you very much. I would like to have a अच्छा, दूसरी एक चीज मैं ब्रिगेडियर मुजीब साहब से कहना चाहूंगा और आपसे कहना चाहूंगा कि इट इज टाइम टू गो फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपका बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है यहाँ पे पीडियाट्रिक का, ठीक है। जो बच्ची आपने दिखाई है तो इसके सिबलिंग्स वगैरह को भी चेक करवाएं, क्योंकि जिस तरह आप खुद बताया कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। जी सर, तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप काम करो और पीस वालों को इन्वॉल्व करो, इस पेशेंट को देखो, इसके सिबलिंग्स को देखो, इसके रिलेटिव्स को देखो। थैंक यू वेरी मच। बस सर वन पॉइंट सर रिगार्डिंग ये था कि थ्रोम्बोएम्बोलिक फेनोमेनन, उसमें आई हैव सर्च लिटरेचर फॉर रोल ऑफ एस्पिरिन और प्लेटलेट, लेकिन बच्चों में इतना कोई अर्ली रोल नहीं था उसमें सर। देयर आर क्लिनिकल ट्रायल है विस्प एंड होप 2 के नाम से, दे हैव डन दैट सेड कि विद सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन इटसेल्फ पायरोडोक्सिन भी के साथ रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इज क्वाइट लो, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सप्लीमेंटेशन रेदर देन प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। सारे केस में जो है एक ही टेक होम मैसेज है, आप जिंदगी में एक आध दफा ऐसे केस को देखते हो, तो जो असल चीज याद रखने वाली इसमें वो एक ही है जो जावेद साहब ने बताई कि जब इसको बेहोश करने लगे तो एनेस्थीसिया वाले को कहने का इसकी ऑक्सीजन किसी टाइम भी कम ना हो वरना ये इधर ही मर जाएगा। बस ये आपको एक मैसेज इसका याद होना चाहिए। बाकी जब ये केसेस आते हैं तो आप हमेशा लिटरेचर पढ़ के उनको फर्दर, जाहिर है ये किसी को याद नहीं रहेंगी ये बातें जो आपने बताई, आपको भी नहीं याद रहेंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये केस आते ही नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन एक बात जो होती है ना, इसमें फेटल हो सकता है एनेस्थीसिया, तो होमोसिस्टिन के साथ हमें ये बात याद होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। सर मतलब हाइपरबैरिक ऑक्सीजन उसमें रखते हैं। राइट, नेक्स्ट नाउ आई लाइक टू इनवाइट माय कोलीग डॉक्टर नेमिनस टू प्रोसीड विद फर्दर। Thank you, Dr. Sajid. I am Dr. Anam, working as Senior Registrar in I Department FMH Lahore. Today I am going to present an interesting but a rare case. Our 22 years old unmarried female resident of Shadman of low socio-economic status was presented to I Department on 14th Feb 2025 with the history of blurring of vision in the right eye for the last 6 months. Blurring of vision was gradual, painless, slightly improved on wearing spectacles, not associated with any splashes or floaters. Past ocular history. Patient had a history of left eye cataract extraction from a government hospital few years back. She is using lubricants on and off for the last many months. Past medical history. She gave history of sensory neural deafness or difficulty in hearing, and she was being evaluated by from an ENT specialist. Patient had history of pulmonary edema for which she was managed conservatively in emergency department. She also gave history of myocardial infarction 1 year back. Her echocardiography was done and showed grade 2 diastolic dysfunction with severe pulmonary hypertension. Past drug history. She is using antihypertensive and antiplatelet drugs as prescribed by her nephrologist, and there is no any specific history of drug allergy. Family history. Mother had history of hearing difficulty and died few months back, and father also gave history of cataract extraction from a government hospital. General physical examination. A young, thin, lean female, fully oriented in time, place, and person, was having stable vitals except her blood pressure, which was quite high at that time. That was 160 by 100. Systemic examination. Cardiovascular examination revealed murmur at a mitral area. ENT examination revealed sensory neural deafness, and it was confirmed on doing audiometry.
Rest of systemic examination was unremarkable. Ophthalmological examination. Her visual acuity in right eye was counting finger, which was improved to 636 on doing best corrected visual acuity, while in the left eye, her visual acuity was 636, which was improved to 626 on doing best corrected visual acuity. Autorefractometer value was minus 23.25 diopter sphere with minus 4 diopter cylinder at 180, while in the left eye it was minus 3.75 diopter sphere with minus 3 cylinder at 105. Intraocular pressure was normal in both eyes. Axial length. Axial length in the right eye was 24.77 millimeter, while in the left eye it was 25.54 mm. Keratometric readings shows K1 was 44.5 diopter, while K2 was 45.75. In the left eye, K1 was 46.5, while K2 was 44.25. Anterior segment examination. As you can see in this picture, there is anterior lenticonus, which is characterized by anterior axial protrusion of the central part of the lens. This is the oil droplet reflex which was seen on doing retroillumination, as you can see in this picture. Left eye was pseudophakic. Rest of the anterior segment examination was unremarkable in both eyes. Posterior segment examination revealed bilateral dot and fleck retinopathy. There are multiple yellowish white superficial deposits supratemporal to fovea in both eyes. No peripheral retinal degeneration was noted in both eyes. So combining our systemic findings with ocular findings, we came to the provisional diagnosis of Alpert syndrome. Regarding management, patient was counseled in detail about the disease, its pathophysiology, its management, importance of follow-ups, and management was multidisciplinary approach. Patient was already being seen by nephrologist and ENT specialist. For ocular part, we planned and did right light clear lens extraction with implantation of monofocal IOL in right eye. IOL power which we calculated was 20.5 diopter. Patient was already myopic in left eye, so we planned and implanted power of 23.5 diopter in right eye. This was her post-operative autorefractometer value. It was minus 3 diopter sphere, minus 0.5 cylinder at 10. And best corrected visual acuity was 624, partial in right eye. A brief discussion about Alpert syndrome. Alpert syndrome is a multisystemic disorder. Basically, there is mutation in gene that codes for type 4 collagen in body. The gene is COL4A3. Collagen is an important component of various structures in the body. In Alpert syndrome, three main body systems are involved: eye, ENT, and kidneys. Most common inheritance is autosomal. X-linked dominant, so it is more common and severe in males, which is followed by X-linked autosomal recessive and autosomal dominant inheritance. As you can see in this picture, eye involvement can result in lenticonus. Renal involvement can cause end-stage renal disease with transplantation, only cure at the end. Ear involvement causes sensorineural deafness, as collagen is an important component of cochlea. Ocular many signs are more frequent and less frequent. The most frequent ocular signs include anterior lenticonus with oil droplet sign, which is usually axial, and dot and fleck retinopathy. This is the anterior segment OCT showing anterior lenticonus. You can see there is anterior axial protrusion of lens. Less common complications include corneal posterior polymorphs corneal dystrophy, recurrent corneal erosions, microcornea, cataract, posterior lenticonus very rare, spontaneous capsular rupture, lamellar or full thickness macular hole. For ocular management, we deal according to the complication. Severe corneal disease required keratoplasty. Lens-induced complications required lens extraction with IOL implantation. Fleck retinopathy doesn't require any treatment because it doesn't interfere with VN. And most important thing is screening of relatives and multidisciplinary approach. Thank you.
राइट में आपने कितनी पावर का लेंस डाला था? सर 20.5। 20.5 का? सर 20.5 कैलकुलेटेड थी, फिर हमने 23.5 का डाला था। लेंस कितनी पावर का डाला था? 23.5। तो -23 है ना? सर बेसिकली इतने हाई नंबर के साथ पेशेंट आया था तो हमने रूल आउट किया था कि मायोपिया एक्सियल है, कॉर्निया की वजह से है या लेंटिकुलर है। तो लेंटिकुल इसकी एक्सियल लेंथ भी उससे कोरिलेट नहीं करी थी। लाइक -23 का लेंस नंबर की है। पावर क्या डाली थी? सर 23.5। क्यों जी जावेद? एक मिनट। सर इतनी हाई रिफ्रैक्टिव एरर है तो इसको लेंस कितना पड़ेगा? एंटीरियर लेंटिकोनस है। राइट। इसकी वो एक्सियल लेंथ ठीक थी। एक्सियल लेंथ ठीक थी। यस। So the calculation was according to the formula, and we kept the patient 3 diopter myopic to correlate with the other eye. वो क्रॉस सेक्शन वाली पिक्चर दिखाएं। बंद बताओ। ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड आगे 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 डिस्कशन में था। This explains what the way Exactly. points. But this is basically a curvature. Curvature mark. 10 millimeter curvature होगा। जी सर। सर 10। Thank you very much. बहुत शुक्रिया। Any question for this? Thank you very much, Anam, Dr. Sajid, and my MO's excellent presentation from your levels. And I am obliged to Professor Imran Akram Saab, Chaudhary Saab, Bhatt Saab, and my other colleagues. They added a lot of knowledge to my department, to all the colleagues here, and to me, I must say to myself as well. I got educated. I think I will be a better educated person on leaving this session. Thank you very much. अलग है, वापस जाएं इसमें ये तो इस मोड में जाना, दूसरे मोड में जाना। नहीं नहीं मेरे साहब वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आप पहुंच गए। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Can I start? Actually, this part of session was to be presented by our Professor of Dermatology, who could not come due to his personal reasons, so it was allocated to me to go for that. So I made a presentation that was in accordance with the cases of today. So how do you manage the patients who have posterior, either absent posterior capsular support or weak support? So this presentation is in accordance to that. To aim is to ascertain the safe cataract surgery in the absence of weak posterior capsular support
are absent support using hooks, CTR, and scleral resistant lens implants. So we have done all in this presentation. This is a traditional Sioni CTR, Sioni CTR with an island and CTS. Yani it is just a section, it's not complete ring. CT segment है ये. So first we will have a bit discussion on phaco in cataracts with incomplete capsular support, and afterward phaco in cases with no complete capsular support. So wait तो नहीं करना, wait कर जाना. ऑडियंस की सब Thank you. To start with the phaco in cases where there is poor capsular support. We have seen in practical life that there was small calculation of cases which I had done. This was 3/4 of the cases were due to trauma. Trauma is the most common cause of subluxation in our part of the world, followed by congenital and 1% of the myopia. High myopia can lead to subluxation even in the absence of other pathology. Thank you. In the age, 50% are again in the young people and reduce with the as the age passes because trauma decreases. But what we should be taken care of in managing these cases? Anesthesia, we should not do with topical anesthesia because lens is not stable, and even the slight movement of the patient's eye during surgery can cause problem, and already it is decompensated sort of eye. So either should be general anesthesia unless there is no contraindication, or preferably and frequently what we use is peri or retrobulbar anesthesia. Eye is very, very stable and you can proceed smoothly. In CN के लिए ये होता है कि it should be clear cornea in CN away from the site of zonular dialysis. आगे वीडियो में अच्छा नजर आएगा.
We should have iris hooks or capsular hooks. आजकल हैं, हम पहले तो iris hooks लगाते थे, अभी भी iris hooks serve the same purpose as that of capsular hook. So in these cases, because we have to stabilize the capsule, so these should be there in our armory. Another principle which we should all follow during surgery is hydrodissection is very important. Hydrodissection as well as hydrodelineation. You should have separate the capsule from the rest of the lens, and then cortex from the nucleus, and then nucleus will be mobilized well, and we will need less manipulation and less phago power in this patient, so that lesser and less stress is there on the capsule. We should not capture the equator because that is frequently possible if we don't take care of this thing. Phago उसको हाई लो कर दें, डायनेमिक्स कम रखें, उसकी वैक्यूम भी कम रखें, एस्पिरेशन हर चीज आप लो लेवल पे आके वेरी वेरी कंफर्टेबल. द मोबिलिटी ऑफ द फैगोटी शुड बी वेरी मिनिमल. वर्टिकल आप सामने रहें, आप दाएं बाएं मूव करें, वरना यू विल सक इन द कैप्सुलर एज. सीटीआर पास होने चाहिए. बाकी लेंस भी प्रेफरली थोड़ा सा बहुत छोटे हैप्टिक वाले नहीं होने चाहिए, बिकॉज सेंट्रल नहीं होता, तो इट शुड बी 6 मिलीमीटर मिनिमम. अब ये मैं थोड़ी सी वीडियो बहुत सारी थी, बट जो मेरी रेलेवेंट थी मैंने वो इसमें रखी है. दिस पेशेंट, ये पैराऑपरेटिव इसकी पिक्चर थी. ये पेशेंट जो था, इसका कैटर तो था, 25% सबलक्सेशन थी यहाँ पे, एंड देयर वाज विट्रियस प्रोलैप्स आफ्टर ट्रॉमा. इसकी वीडियो है ये. Always stain. It is mandatory to stain in these patients, particularly whether they are soft cutters, whether it is clear, whether you see red reflex. Always stain. Stain has dual purpose. It not only stains the capsule, it makes the capsule more stable and stronger. So rexes become easier. Then fill it preferably with cohesive viscoelastic that maintains the intraocular pressure and the depth of anterior chamber during surgery. Two side ports. Now start rexes away from the dialysis. ये dialysis यहाँ जा रही है, थोड़ा सा दूर रखें इसको, ये आगे नहीं होती, ये थोड़ा सा, ये मैं स्पीड अप करूँगा इसको थोड़ा सा आपको टाइम बताने के लिए. एक्चुअल चीज़ है फैको में आपने ट्राई टू डिवाइड एंड सक दिस. इसमें देखें सीटीआर भी नहीं लगाया हमने, सर्जरी शुरू कर दी है, विस्कोइलास्टिक हैवी रखा हुआ है अंदर, एंड वी हैव स्टार्टेड द सर्जरी जस्ट लाइक नॉर्मल फैको एमल्सिफिकेशन बिकॉज देयर वाज ओनली 25% डायलिसिस एंड ट्रॉमेटिक. एक और चीज नोट करें, ट्रॉमेटिक डायलिसिस इज ऑलवेज बेटर देन कंजेनिटल वन, बिकॉज इसके बाकी यूनिट मेंटेन्ड है. कंजेनिटल में डिजीज वाली में बाकी यूनिट वीक होते हैं, सो लेंस कैन हैव वायर ड्यूरिंग सर्जरी. सो वंस वी हैव डन इट, हमने विटेक्टमी भी थोड़ी देर पहले इसमें बताया था की थी, विटेक्टमी नहीं की थी, अभी पहले हम लेंस डाल रहे हैं. स्टिल विट्रियस इज स्टिल देयर, हमने उसे नहीं छेड़ा. इम्प्लांट द लेंस विद इन द बैग. Once lens is placed in the bag, then we can take a few cuts of the vitreous over there. Then अब यहाँ से विटेक्टमी पोर्ट डाली, ये यहाँ डायलिसिस थी, विट्रियस भी था एंटीरियर चैम्बर में. नो सक इट and cut it and suck it, and at the end there should be no vitreous in the anterior chamber. So this is the situation where traumatic dialysis is less than 25%. ये कंजेनिटल था, जैसे हमारे केस नहीं था. लेंस जहाँ जाते लेंस ऐसे ऐसे जा रहा है, रेडिकल डैंगलिंग. सो ये जस्ट विस्को डालते देखें लेंस मूव कर रहा है आपका, तो ये बहुत मुश्किल केस होती हैं इसमें. इसका रूल यह है कि जो ही आप स्टार्ट करते हैं आप इसको कैप्सूलर एक्सिस उसी जगह फिक्स कर लें उसको, अदरवाइज दिस लेंस विल कीप ऑन मूविंग विद योर एक्सिस. आप वहां पे फिक्स कर लें, प्लेस एन हुक ओवर देयर एंड फिक्स द कैप्सूल राइट देयर, एंड देन वंस डन, now you can easily and safely play with the capsule and you can carry out the desired rexes in this patient. जब रेक्स हो जाएगी उसके बाद फिर then we will support all the rexes with multiple iris hooks. Otherwise this lens is not going to
help us in surgery. तो इस हुक्स और भी लगा दें आप इसमें. Hydrodissation very important. Hydrodissation, it should be good quality. It should totally separate the lens from the capsule, and capsule should be independent of lens. Otherwise, capsule will be sucked in. Already weak होता है, zonule होते नहीं है. तो phaco, once this is there, phaco is okay. इसमें CTR पहले नहीं डाला. क्यों नहीं डाला? Why didn't place CTR first hand? Because that will fix the soft lens matter, then it will not be easy to suck that lens matter after surgery. पहले निकालने सारा, because हमने कैप्सूल तो पकड़ा हुआ है ना, और हम सर्जरी कर रहे हैं, we are not damaging the edges of this equator. So first take out the lens matter, clear it. Once lens is clean, then you can place the CTR. और CTR जरूरी क्यों होता है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा जब लगाते हैं तो. Whenever there is congenital dehiscence, to whatever reason, it is mandatory to have the CTR implantation. थोड़ा मैं क्विक कर लेते हैं इसको. So now lens matter is out. Rest soft lens matter is being sucked by a simple cannula by manually to maintain the intraocular pressure. This is the cut side rest you can see now. This is a CTR. It has to be implanted within the bag. Otherwise ये स्टेबिलिटी नहीं आएगी इसकी. ये टाइट हो जाएगा, अपने आप सारे को स्टेबल रखेगा और फिर वो मूव नहीं करेगा लेंस बाद में. इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट इसमें. So done. Now you can implant intraocular lens, monopiece lens within the bag. And before final fixation, you can take out the hooks. Then dial the lens and remove the viscoelastics from into each chamber. This is the case where there are congenital dialysis, subluxation in all directions. ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग था. ये केस ट्रामा था बहुत बड़ा, और देखो कितनी बड़ी डायलिसिस है इसमें. दिस मच. इसकी बड़ी काउंसलिंग होगी, बड़ी डिस्कशन हुई इस पेशेंट की कि क्या करना है क्या नहीं करना. आखिर में फिर इसको कहा कि CTR जो है ना, सीओनी विद आइलैंड वाज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान. मैंने पेशेंट वाज अफोर्डिंग, मैंने खुद मंगवा लो. मैंने लिख दिया, उन्होंने खुद कहीं से जर्मनी से मंगवाया ये CTR. बाकी कहानी आगे बताते हैं इसमें क्या हुआ. Again, as a rule, first do very good sort of coloration of the capsule with trypan blue for the two reasons I have told. And interestingly, yes, but vitreous was not prolapsing. There was big dialysis. Vitreous could be seen underneath, but there was not prolapsation, prolapse of vitreous. Rexes, very careful, very stable. इसमें देखो मैंने अभी नहीं लगाई हुक. क्यों नहीं हुक लगाई इसमें? Because it is traumatic and the rest of the zonules are okay. They allow movement of the rexes without the movement of instability of the lens. So things are at their place despite this much of the dialysis. बाकी साइड जो 2/3 हैं वो बाकी 3/5 ओके हैं, 2/5 खराब थे इसमें. नो इसमें आपने जिस तरह हम बताते हैं ना स्क्लेर फिक्सेशन लेंस में, आप तीन स्क्लेर फ्लैप लिया यहाँ से, इसको बाद में यूज करेंगे. कैप्सुलर हुक्स. थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं इसको आगे. नो दिस इज CTR. इसका आइलैंड को सूचक कर लेते हैं विद 90 प्रोलीन एंड देन इंजेक्ट. इसमें बिफोर हैंड इंजेक्ट कर रहे हैं. व्हाई बिफोर हैंड? बिकॉज द थिंग्स आर नॉट स्टेबल. देयर इज वेरी बिग डायलिसिस एंड
minor stretch will cause further rupture and prolapse of vertebrae in anterior chamber. Then we will not be able to implant such a beautiful lens in this patient. So पहले इसको कर लिया, and we will try to make the maximum convexity in the area of dialysis. यहाँ पे उसको speed back और करेंगे. With the second instrument जैसे हम hook लेके we can fix it properly. No suture. ये display था ना यहाँ पे. Feed this needle of the suture in 27 gauge needle coming from this sclera flap. Just like जो sclera physician lens लगाते थे ना हमको. यहाँ ले जाएं इसको and then suture it. So this सारा assembly will go towards the equator. Yes, आपने फिर सर्कल में suture कर दिया इसको zonule को. It took more than 1 hour actually. और ये मैं GA में किया था पेशेंट. I was throughout मैं बीच में पानी भी पिया था दरमियान में. It was so stressful surgery. बंदे जो था अफसर था, सीनियर अफसर था रिटायर्ड. एक और स्ट्रेस होता है वो. Lens was Alcon IQ lens, not for commercial, but क्योंकि यूज ये किया था दिखाया मैं इसमें. Okay. So that was with the poor support. Now there are people who have no support. बहुत present आ गए या lens ही absent है. सर कि हम देखें जिसमें था कि there was nothing we could do to place the lens within the bag. So then you have to resort to sclerosis lenses. तो ये बड़े मशहूर आपने सब जानते होंगे रोटो का जो पहले हम लगाया करते थे sclerosis lens. और this is the multi-piece Alcon 60 ml 60 with blue haptics जो हम जिसे कहते हैं ना मल्टी पीस वो लेंस है. ये भी काफ़ी हम यूज़ करते हैं. इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये टूट जाता है लगाते हुए. बट स्टैंडर्ड ये मैं इसके पहले दिखाऊंगी ये करते हैं. दिस इज लेटेस्ट कोवा का कंपनी है जापानीज. इनका लेंस है मिलता जुलता है उससे मल्टी पीस से, बट इट्स हैप्टिक्स आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. दे डोंट गेट ब्रोकन. उसके जो टूट जाते थे कभी कभी जब फीड करते हैं तो ये टूटते नहीं है. फॉर दिस जो सर्जरी इन दिस पेशेंट्स जापानी टेक्निक में करते हैं उसमें ये टूटता नहीं है. इसको छोड़ें. नो चल पड़े वीडियो नहीं चल रही इसकी. मेरी वीडियो नहीं चल रही. बड़ी तो होनी चाहिए इसमें से निकलने की. ये तो आगे चला था छोड़ने. ये वाली है ना, उसके अंदर भी कंप्यूटर में भी है. कंप्यूटर में है ना तो ये चलनी चाहिए थी ना. ये मेरे में ऐसा कंप्यूटर में नहीं. इस कंप्यूटर में नहीं है. मेरे वाले में ये बना ये नहीं. मेरे में फिर ऐसा नहीं चलेगी. कंप्यूटर में पड़ी होगी ना पहले. यूएसबी में कॉपी की हुई है. यूएसबी चेक करो ना जरा. यूएसबी वापस दे दो. उधर वहीं चला देंगे यूएसबी में. मेरे पास ये सर ये लगी है. मेरे वाली है इसमें बैक है ना बैक से. ये मैं कौन सी वाली ये नहीं ये नहीं ये लगा दीजिए. ये लगा ये वाली ये लगा दीजिए. लगा ये वाली ये लगा दीजिए. उसमें लगा ना. नहीं यहाँ से जो है ना वो एक वीडियो नहीं चली वो तो क्लास हम जो लगाते थे शुरू में मतलब से बना के कंप्यूटर नहीं मेरे वाले में आप पहले लग जाएगा.
उसका फ्लैप लगा के हम इसी तरह से आप उसका लीडर से टेक आउट द इसको है ना एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन हैंग हो रही है ना। ये तो सही है और है बड़ी इंटरेस्टिंग सर ये नहीं है कर लो इसको मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये भी है कोरोना ने इसका इफेक्ट किया सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें वो ट्रांसफर आगे ले जा रहे हैं करते हैं इसको हम स्पीड अप करते हैं टाइम कम हो रहा है मेरे कोलीग इरिटेट हो रहे हैं इसमें पेशेंट में पुराना हुआ था इसका जो फाइबर थे इसके मिडल को टाइट हो गए थे और ऊपर नहीं रहा था देन वी प्लेस दिस अगेन दिस hooks and then surgery was standard कोई कैप्सूल वगैरह पीछे नहीं था ये दोनों तरफ से बने हुए पेशेंट दोनों तरफ से बनाए हुए से आपने हाफ थिकनेस फ्लैप्स एंड देन सूजा द लेंस टेस्ट करते हैं हम विद द जो होल होता है उसमें स्क्लेरिफिकेशन लेंस में रोटो में वो था मैं आई थिंक इट्स गोइंग कुछ ये इतना टाइम नहीं है ये आप सब करते होंगे कितने लोग करते हैं स्क्लेरिफिकेशन लेंस रोटो वाला किया हो किसने आपने किया होगा शाबाश गुड तो ये तो फिर अब नहीं होता आजकल जमानी आ गई है तो इसलिए इसकी कम यूटिलिटी है बट इट इज स्टिल वैलिड मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा डन थैंक यू जमानी वाला निकालने अगला एक लास्ट स्लाइड जमानी टेक्निक बड़ी प्यारी स्लाइड है जमानी टेक्निक के साथ ना आगे प्रेजेंटेशन नीचे जाना प्रेजेंटेशन नीचे आ जाएगी ये वाला इसका नेक्स्ट ये मान ये चला दें इसको सीधे चला दें इसको ये नेक्स्ट है इसी नीचे वाली ये है ये सर चल पड़ी थी यार इसके ऊपर इसके ऊपर करता हूँ इसके ऊपर उसके ऊपर कर नहीं ये है ना इसके ऊपर कर देंगे क्यों नहीं चल रहा यार ये तो चलना चाहिए था वहीं से चला दो वीडियो हाँ वही चल वीडियो लिंक का इशू आ रहा है इसमें ये मनी वाली ये नो ये आज का हम यूज करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी यू विल हैव कमानी कोअल लेंस स्पीड अप करते हैं इसको ये पहले वाले पार्ट स्पीड करते हैं इसको मैं ट्विस्ट द नीडल 27 के नीडल की आप दो बना लेते हैं दोनों तरफ से डालने के लिए नो इट इज वेरी ट्रिकी आइडियली हमारे पास वी शुड हैव विटियस कटर आल्सो एंड दैट शुड बी देयर फ्रॉम द पास प्लाना बट इस केस में इतना विटियस था ही नहीं कि आगे आता तो आपने स्टैब इंसिजन लगाए bigger incision here about 6 millimeter incision from where you try to insert this cova lens कभी कभी लेंस जाते से नीचे चला जाएगा ग्रेविटी सपोर्ट नहीं है उसको पीछे वाले हेप्टिक को लीडिंग हेप्टिक को तो आप ठीक है ट्रेलिंग हेप्टिक को आपने पकड़ना है ये स्पेशल फोर्स होती है मैक्स ग्रिप you feed it in this needle 27 gauge max grip need forceps maximum grip small put it here you have taken it out from the sclera इसमें कोई sclera flap नहीं लगा you take to full thickness of sclera जो needle से गया था and then hold it there इसके बहुत ज़्यादा इसको मैंने किया हुआ एडिट बहुत बड़ी थी ये Similarly, other haptic
taken into the needle and back from this. अब इनमें कोई कैप्सूल सपोर्ट नहीं है. आजकल सर्जरी से people are very comfortable because they can get useful vision. Not never as useful as it is in the bag, but still cauterize the end, make it thick, and then take it under the conjunctiva, cover the conjunctiva over it, and then centralize it. That's it. Thank you very much. That was all about the surgery. Now, at the end of session, I will request my honorable and my dynamic General Secretary of Tanvir Society of Lahore to come and greet the people. Thank you very much. कुछ स्लाइड्स हैं, कुछ प्रेजेंटेशन तो हो गई हैं, शीट्स हमारे पास, बुकें हैं. जी जी. Thank you very much, sir. Professor Brigadier Majid Sahab. It was an excellent and well illuminated talk. Normally we have presentation, the guest speaker that is from the other specialty, because you can witness in current era of curriculum revamping at undergraduate and postgraduate level, there is inclusion of interdisciplinary and interprofessional communication, patient safety, professionalism and empathy, and ethics at the level of undergraduate curriculum. Even you can see UHS has included many of these domains at undergraduate level. I am still in a state of denial and confusion whether this department is accredited for FCPS or MS. MS and MCPS and FCPS. Yeah. Because I think there should be a big round of applause for Brigadier Majid Saab, Dr. Niazi Saab, and the entire team for excellent presentation in terms of content, quality of presentation, and case selection. We are privileged. This meeting is being conducted under the leadership of our President OSP, Professor Dr. Javed Chaudhary, an elder brother, and you will always see him working tirelessly and selfless for the betterment of OSP. We have tradition of awarding certificates souvenirs to the presenters. I would like to request our Joint Secretary, Professor Mia Arshad Saab, कि वो आए और although it was a nail-biting sort of experience for the judges as well, क्योंकि presentation सारी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और quality की थी, तो ये आके grade करते हैं. और मैं request करूँगा ब्रिगेडियर मजीद साहब आप आ जाएं स्टेज पर, लोधी साहब आ जाएं, जवेद चौधरी साहब प्रेसिडेंट हमारे, प्रोफेसर अहमद भट्ट साहब, इमरान साहब नहीं, मियां शफीक साहब, और आप नजर साहब आप होस्ट हैं, आप भी आ जाएं. और आप सर बोलते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. आज की मीटिंग को अगर हम सिंड्रोमिक क्लिनिकल मीटिंग कहें तो बहुत ज़्यादा मुनासिब होगा. ऑल द रेयर सिंड्रोम्स वर देयर. बड़ा अच्छा आप लोगों ने पेशेंट्स को मैनेज किया और प्रेजेंटेशन हमारा एक्सीलेंट. जो थोड़ी सी डिसाइड करने में मसला ये हो रहा था कि जो एसआर्स है उनको इंक्लूड करें कि ना करें इस कंपटीशन में, तो दिस टाइम उनको एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया है. लेकिन जो उनको प्राइज मिले, आई रिक्वेस्ट कि वो अपने डिपार्टमेंट में उसको एक सेलिब्रेशन में इस्तेमाल कर लें, उसको ज़ाती ना समझें. तो पहले नंबर पे आए हैं डॉक्टर साजिद काजमी. प्लीज. और इसमें जो कैश भी है और सर्टिफिकेट भी है और शील्ड भी है. दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर अनम यूनस. डॉक्टर मरियम नदीम.
Dr. Syed Wakat, please. आपको थर्ड का है, ये आपका कैश प्राइज भी है। कैश भी है। हाँ जी, ठीक है। फोर्थ वन जी जी आ जाए। जी मीटिंग नेक्स्ट वोट का टाइम साहब ठीक है। हाँ जी, ओके, थैंक यू। नहीं उसमें नहीं वो है उसमें वो मैं अच्छा उसमें एक तो ये कि जो ब्रिगेडियर मजीद साहब ने इतनी मेहनत की, इनके वैसे एक नहीं दो मौके बनते हैं, एक एज ए गेस्ट स्पीकर और एक एज ए हेड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट ओएसपी और हमारे जो सीनियर्स हैं कि ब्रिगेडियर साहब को एक बोके प्रेजेंट करें। बोके ये शील्ड इनकी जो है एज ए गेस्ट स्पीकर है। और इसमें जो अलर्गन है उनकी हमेशा एकेडमिक सपोर्ट हर तरह से क्लिनिकल मीटिंग हो ना हो या जिस तरह की भी एकेडमिक सपोर्ट हो, तो ये हमारे साथ हमेशा हमारा पार्ट एंड पार्सल है एकेडमिक्स का। तो अहमद नईम साहब और उनकी टीम के लिए एक तो क्लैपिंग और दूसरा उनके लिए बोके और सर्टिफिकेट। अच्छा एक तो कर्नल साहब और डॉक्टर अक्षय साहब आप भी आ जाएं, जगह है अभी। आप जाए सब आप भी आ जाएं, सारा आप भी आ जाएं, ये फैकल्टी आ जाए। फहद आप भी आ जाए। हाँ। हमारा पिछले कुछ वर्षों में जो था उसमें जो मैं पर्सनली एक मौके अपने प्रेसिडेंट की है कि जिस तरह मैं बड़े दिल का वायदा किया कि थोड़ा सा जो हमारे सीनियर मेंबर्स और बड़ों के लेवल पे जिस चीज नेम था, मेरे ख्याल है कि एक दफा वो सॉफ्ट प्रोसेस हो चुका हुआ था, उसमें डिस्कशन में एग्जीक्यूटिव मेंबर जो कमेटी उसकी एक दो मिनट हो किया, लेकिन दायरे जिस बड़े दिल का मैं किया ग्रेजुएली साहब हमारे प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपने दायरे इसमें हमारे जितने सीनियर हैं, लोधी साहब हैं, मियां शरीफ साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, बाकी जितने बड़े हैं हमारे जो सांसद चले गए, उन सब ने जिस तरह हमें ओएसपी की ट्रेडिशन रही है और लाहौर की खास तौर पे हम उससे कनेक्टेड रहे हैं, तो होना बहुत जाहिर है, हो सकता है नहीं मिल सकता, लेकिन जब बड़ों ने एक बात कह दी, then there is no discussion. This is the honor which we give to our elders, इसीलिए हमारे छोटे और golden words प्रोफेसर दाऊद साहब ने कहे थे, तुम अपने छोटों के सर पे, तुम अपने बड़ों के सर पे पगड़ी रखो और हमारे सर पे। This is the golden principle. एक और बात मुझे मियां साहब डेलीगेशन साथ सर्विसली माशाल्लाह हमारी सोसाइटी के साथ चल रहे हैं और मिशन कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सब के लिए। और इसमें स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट ओएसपी के अभी जो जिसका माशाल्लाह आजकल जिस तरह एक्रेडिटेशन सीपीएसपी करती है, वो मुश्किल प्रोसेस होता है, तो बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो
रिसेंटली मैंने बड़े ऐसे कोशिश में लगे हुए थे उनका इंस्टीट्यूशन माशाल्लाह रिकॉग्नाइज हुआ है तो प्रेसिडेंट मस्ट बी प्रेसिडेंट होके तो मियां अच्छा साहब और जाहिद साहब एक इंस्टीट्यूशन माशाल्लाह हमारे एजुकेशन ऑफ उसके लिए एक खुशी का मौका हमारे लिए मियां साहब अब जो प्रेसिडेंट गोष्ठी ठीक है जो साहब इसमें का कि ये आर्टिस्ट है 24/7 और सेल्फलेसली और टायरलेसली इज अवेलेबल और तीसरा में ये जो है यूनाइट में हिस्टोरिकल मूवमेंट वाकया वाकया में कि जिस तरह इन्होंने इस मामले को डाल दिया मुझे कोई अपनी मिसाल रखता है और मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर हिज वैल्यूएबल वर्ड्स इन दिस सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूं प्रोफेसर ब्रिगेडियर मजीद मलिक साहब का कि उन्होंने यहां पे हमें बुलाया, सुनने का मौका दिया, अपनी कारकर्दगी दिखाई। एंड इट इज ऑलवेज प्लेयर टू विजिट प्रोफेसर मजीद मलिक। आई विल रिक्वेस्ट यू टू गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। आज जितना मजा मुझे ये अटेंड करके क्लिनिकल मीटिंग पहले शायद नहीं आया क्योंकि सारे के सारे केसेस दे वर सो इंटरेस्टिंग, वेल प्रिपेयर्ड और मेरा हर किसी के लिए क्लास बनता है। ठीक है, मैं मशकूर हूं हमारे सीनियर डॉक्टर कमल लोधी साहब, मियां मोहम्मद अफसल साहब, प्रोफेसर शफीक साहब, प्रोफेसर ख्वाजा खालिद शोएब और बाकी जितने भी ब्रिगेडियर तारक शरीफ साहब मेरे चले गए शायद, अच्छा बैठे हैं, सॉरी ब्रिगेडियर का नाम लिया तो जाना कितने है, आई एम सॉरी। तो मैं सबका मशकूर हूं कि आप लोग तशरीफ लाए और इस जो है ना इस मीटिंग को कामयाब किया। मैं जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, स्पेशली जो सुपरवाइजर हैं और जो अपने डिफरेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मीटिंग जो होती है ये बेसिकली इट इज फॉर लर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स, नॉट फॉर अस। लेकिन रेजिडेंट को यहां पे नहीं लाते, असली चीज तो रेजिडेंट के लिए होती है। ये मैं एंड टाइम पे जरा खड़े हूं, ये मेरे 4 रेजिडेंट हैं, मैंने 11 बजे फोन किया, मैंने कहा थोड़ी देर तक यहां पे पहुंचे, वो पहुंचे हुए हैं। ठीक है, इसी ये बैठे प्लीज। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी टीचिंग हॉस्पिटल में लोग हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कि वो अपने जो ट्रेनिंग्स हैं उनको एनकरेज किया करें कि वो इसमें, बल्कि उनके लिए कंपल्सरी बनाएं कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें, क्योंकि बेसिकली इट इज फॉर देम। तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आइंदा पार्टिसिपेशन इससे भी ज्यादा बेहतर होगी। और मुझे पता है कि आप लोगों को भूख शुक लगी होगी, ज्यादा बातें सुनने में मूड में नहीं होंगे, हम तो कुछ कुलीला पड़ रही है, तो अब लंच का टाइम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अपने नबी साहब, एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक ओएसपी टीम, अपने जनरल सेक्रेटरी माशाल्लाह हमारे वाइब्रेंट पर्सन, कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया। और अहमद अदील साहब का तो जवाब नहीं है, दानिश की दानिश है, एजाज है, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।